आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप स्टॉक्स की जो ऑल टाइम ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस ले एंड आगे बढ़े या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। TCS, Infosys कैन लीड पुल बैक इन निफ्टी IT। आनंद जेम्स, आगे डिटेल में देखते हैं। आनंद जेम्स एडवाइसेस ऑन निफ्टी IT इंडेक्स ओवरसोल्ड जोन पुल बैक ड्यू टू सीजनलिटी। आनंद जेम्स जो कि एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट भी है, निफ्टी IT इंडेक्स पर एडवाइस दी हुई है। स्टॉक्स लाइक TCS, Infosys, विप्रो, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस में लीड द रिबाउंड। यहाँ कई स्टॉक्स के नाम भी दिए गए हैं जैसे कि TCS, Infosys, विप्रो, टेक महिंद्रा एंड एम्फेसिस। वॉच फॉर डेड कैट बाउंस रिस्क, शॉर्ट कन्वर्टिंग rallies and potential breakout signals in PSU stocks. James says, should Nifty Bank manages to push above 49,100, one could brace for short conversing rallies with eyes on 49,500 in initially. निफ्टी बैंक को मैनेज करना पड़ेगा कि 41,900 के ऊपर प्राइस को पुल करे एंड 49,500 को कवर करे। निफ्टी IT इंडेक्स हैज मूव्ड इनटू द ओवरसोल्ड जोन which warrants a pullback which could be related to seasonality as well, with an average of 4.5% gain since 70% of the time in May in the last 10 years, says Anand James, Chief Market Strategist, Geogist, फाइनेंशियल सर्विसेज। लास्ट 10 इयर्स की बात करें तो एवरेज 4.5% जितना गेन देखने को मिला है, वो भी 70% मई मंथ में। आनंद जेम्स क्वेश्चन भी किए गए हैं। Nifty ended the week with a small gain, but the stress seen on Friday doesn't seem to be a good sign for bulls. How would you approach the market in the week ahead? तो चलिए देखते हैं कि आनंद जेम्स ने क्या आंसर दिया है। We had gone in the last week expecting swings while ruling out the possibility directional moves on either side despite being in the vicinity of a record peak. Last week की बात करें तो swing expect किया था। Our line of contention was the weakness in directional moving indicators which held us back from टेकिंग स्ट्रॉन्ग वन साइडेड प्लेस, जो कि एक वीकनेस साबित हुआ है कि एक साइड डायरेक्शनल मूविंग इंडिकेटर की वजह से। Friday's plunge had enough moments to have a rethink on this approach, but the late bounce back held true to our non-directional expectations. लास्ट फ्राइडे की बात करें तो इनफ मूवमेंट भी थी, लेकिन बाउंस बैक की वजह से क्लैरिटी नहीं मिल पाई। दैट सेड द पुल बैक इन द क्लोजिंग आवर एंड रिजेक्शन ट्रेड अगेन एट द 23% फिबो लिमिटिंग फर्दर एडवांस सजेस्ट अ टेक्निकल डांस ड्यू टू विच वी कैन नॉट रूल आउट ऑफ the possibility of calling this a dead can bounce back, followed by the deeper plunge aiming 20,300, especially given the rise of to vicinity of 15 from record low. Towards this end, we will wait for a push above 22,550 to follow up sides that could aim for the long awaited objective of 23,200 to 600. इन शॉर्ट ये स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट ये कहना चाहता है कि वेट करेंगे कि प्राइस 22,550 के ऊपर जाए तो हम प्राइस 23,200 टू 23,600 तक का टारगेट रख सकते हैं। Disclaimer, this is not investment recommendation. Do your proper research to before investing any of these things.